Good morning, students. Today we are studying the chapter पेपर वन पेपर वन का फोर्थ चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्टडी करेंगे. We have completed paper 2 chapters. We have completed semiconductor diodes yesterday. All chapters in this paper 2 are completed. Now we will see the paper 1 chapter. Paper 1 we have studied 3 chapters up till now. Now today we are studying paper 1 chapter 4 electronic components. Classification of components. What is the classification? What is electronics component? We are studying this electronics components. The application of electronic science is widely growing due to large variety of electronic components. Most of the success in electronic field over electricity is due to various characteristics of components like non-linear performance, its cost and its size of these electronics components. Without studying theoretically and practically their basic construction and function, it is difficult to understand the working of the circuits. In this chapter, most of the common electronics components as well as hardware has been discussed up to a certain extent so that students can understand the basic action of the component, their ratings, color code system and practical knowledge of component testing. Now we will see the classification of components. How we classify this component? If you observe carefully any electronic circuit, you can be little surprised. There are only 5 varieties of electronics component. Actually, the circuit may appear complicated because if you see any electronic circuit, then it may be if you see any electronic circuit, then it may be seen as complicated. Why? Because of number of different components. Because there is number of different components रहते हैं, but each type belongs to any of these 5 types. ये जो components है 5 types के रहते हैं. Electronics components which are available in the market are classified. We have classified this into into 2 groups. We classify these into 2 groups: passive components and active components. See this. We see electronics components we have divided into 2 types. First, passive component. Second is active component. This passive component is resistors. रजिस्टर में 2 टाइप रहते हैं. एक फिक्स टाइप रहता है, एक बी रहता है वेरिएबल टाइप. 2 टाइप के रजिस्टर रहते हैं. एक फिक्स टाइप रजिस्टर रहता है, दूसरा वेरिएबल टाइप रजिस्टर रहता है. सेकंड पैसिव कंपोनेंट इज कैपेसिटर. एक कैपेसिटर में 2 टाइप रहते हैं, एक फिक्स रहता है, एक वेरिएबल रहता है. ठीक है. इंडक्टर ऑफ 3 टाइप्स: एयर कोर इंडक्टर, आयन कोर इंडक्टर, फेराइट कोर इंडक्टर. सिमिलर और एक्टिव कंपोनेंट. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में 2 टाइप है. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में 2 टाइप है. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में 2 टाइप है: इलेक्ट्रॉन ट्यूब
सेमीकंडक्टर्स। एक्टिव कंपोनेंट में पैसिव मीन्स जो पैसिव रहता है, एक्टिव मीन्स जो एक्टिव रहता है। एक्टिव कंपोनेंट में इलेक्ट्रॉन ट्यूब है, सेमीकंडक्टर है। इस इलेक्ट्रॉन ट्यूब में वैक्यूम ट्यूब, डायोड, ट्रायोड, और दूसरा रहता है उसका टाइप गैस फिल्ड ट्यूब। इलेक्ट्रॉन ट्यूब में सेमीकंडक्टर्स में है दो टाइप, डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स। ठीक है। Now we will see first passive component. What is passive component? Since this category belongs to inactive function of the component, inactive function of component, these components do not have capacity to amplify voltage or to rectify the supply. इसमें कैपेसिटी नहीं रहती कि वोल्टेज को एम्पलीफाई करे और उसको सिग्नल को रेक्टिफाई करे। इसमें कैपेसिटी नहीं रहती, इसके लिए इसको बोलते हैं पैसिव कंपोनेंट। Therefore, they are called as passive component. However, without their component assembly, however, है लेकिन फिर भी without these components, assembly of electronic circuit is not possible. Okay? With these passive components go down में without this component, assembly of electronic circuit is not possible. Resistors, capacitors and inductors are called as passive components. ये तीनों क्या करते हैं, बोलते हैं इसको पैसिव कंपोनेंट बोलते हैं। अभी we will see the active component. Be active components. What is this active components? Since these components are capable of performing active functions. Which active functions? Like amplification, रेक्टिफिकेशन एंड स्विचिंग। ये तीनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स। एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाई करते हैं सिग्नल को, सिग्नल को रेक्टिफाई कर सकते हैं, सप्लाई को रेक्टिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफायर्स। थर्ड इज स्विचिंग, स्विचिंग कर सकते हैं, ऑन से ऑफ स्विचिंग, स्विचिंग। They are called as active components. They are called as active components. Hundreds of active components are manufactured. They can be classified into two broad groups. मेन टू ग्रुप्स है इसके, इलेक्ट्रॉन ट्यूब लाइक डायोड, ट्रायोड, इलेक्ट्रॉन ट्यूब लाइक वैक्यूम ट्यूब, डायोड, ट्रायोड एंड गैस फिल्ड ट्यूब। एंड सेकंड, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक डायोड, एलईडी, ट्रांजिस्टर। इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स आर रेयरली यूज्ड because they are outdated. Electron tubes are not used today. Before some years we used this electron tube, but they are now outdated. Okay.